उन्हें के चेक करण लाइ जेकॾहिं हिकिड़े इदारे में हिकु वधीक ॿ थी सघनि थियूं, टे थी सघनि थियूं, 4-5 केतिरियूं मुमकिन आहे थी सघनि थियूं, त जॾहिं हिकु इदारे में हिकु वधीक ट्रेड यूनियन आहे जेको ट्रेड यूनियन आहे उन्हीं तरीक़े सां इहो सभु चूंडियूं थींदियूं, पर चूंडियूं असांजो रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन सरकार जो हिकिड़ो अफ़सर हूंदो। इन शइ में का तव्हांखे ॻाल्हि पुछणी हुजे त ॾिसो त पोइ मां इन शइ में का बि शइ तव्हांखे सम्झ में न आई हुजे त इन्हे जे लाइ जेको आहे अॻिते जेको केस वञे थो कोर्ट थिए थी या जांच थिए थो उन जो ख़र्चो पोइ केरु कंदो? तव्हांजो सवाल जेको आहे त जेकॾहिं मज़दूर ऐं लैंडलॉर्ड विच में को तनाज़ो थो थी वञे ऐं जेकॾहिं मसइलो कोर्ट में थो वञे ख़र्चो केरु बर्दाश्त कंदो? तव्हां जेकी ट्रेड यूनियन ठाही आहे, तंज़ीम साज़ी कई आहे, उन में हर महीने जो चंदो हूंदो आहे ऐं उहो चंदो ट्रेड यूनियन जे अकाउंट में जमो थींदो आहे। मिसाल तौर जेके मज़दूर कमु कनि था उन्हनि जी हैसियत जे मुताबिक़ तव्हां पाण फिक्स करे सघो था, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 50, तव्हांजी हैसियत मुताबिक़ आहे। जेको माण्हू आसानी सां पैसा ॾेई सघे उहो सभु बरकत ॾींदा। मिसाल तौर जीअं 100 वर्कर आहिनि, सभई 50-50 रुपया ॾेई था छॾनि हर महीने, त उहो जमा थी वेंदा अकाउंट में। पोइ इहो जेके ख़र्चा हूंदा आहिनि कोर्टनि जा उन खां थींदा आहिनि, उहो जेको फंड ट्रेड यूनियन जो हूंदो आहे उन में थींदा आहिनि। मुझे यो तव्हां पुछो त यूनियन ठाहिण जे लाइ घटि में घटि मेंबरनि जो तइदाद घणो हुअणु घुरिजे? साईं पुछियो आहे त यूनियन जो ठाहिण लाइ घर में घणो तइदाद हुअणु घुरिजे? अगरि को तइदाद रिस्ट्रिक्शन न, 10 माण्हू आहिनि त रिस्ट्रिक्शन ठाहे सघनि, घटि में घटि को 10 माण्हू आहिनि तॾहिं ठाहींदा आहिनि। ॿियो को सवाल आहे? इहो तंज़ीम साज़ी जो तव्हां जॾहिं सवाल कंदो त मूंखे सम्झ में ईंदो तव्हां सम्झो पिया, ऐं तव्हांजो सवाल न कंदो त मूंखे लॻंदो तव्हां सम्झो कोन। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा ये सवाल है कि जब तंजीम साजी बनाई जाती है, फीमेल्स के ऊपर ज़्यादातर हम लोगों ने बनाई है, तो जब उनको कहा जाता है ना खजानची के लिए पैसे जमा कराओ, तो उनके प्रॉब्लम्स होते हैं कि हमारी तो इतनी उजरत ही नहीं कि हम जमा कराएं। मैंने उनको ये भी कहा 10-20 रुपए, तो कहते बाजी मिलते ही बहुत कम उजरत है हमें, तो हम घर का खर्चा चलाएंगे, तंजीम साजी में पैसे जमा कराएं। तो सर इनका मेन इशू होता है फाइनेंस का, तो सर इतना फिर जमा भी नहीं हो पाता कि वो अपने केसेस को आगे जाके हाईलाइट कर सकें। इस वजह से गुर्बत इनका सबसे बड़ा होता है, उजरत की कमी की वजह से। सही कहा आपने, लेकिन किसी भी काम आगे चलने के लिए पैसा बुनियादी जरूरत है। बहुत ज्यादा ना हो लेकिन कम हो, लेकिन अगर पैसा नहीं है तो फिर काम मुश्किल हो। हाँ नहीं, आपकी बात दुरुस्त है। अब उसका तरीकाकार ये है कि देखिए, इससे पहले जो एग्रीकल्चर साइड की बात कर रही हैं, एग्रीकल्चर साइड में क्या था कि पहले कवानीन का नफाज नहीं था। पहली मर्तबा सिंध गवर्नमेंट ने ये काम किया है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्ट के तहत पहली मर्तबा तंजीम साजी का हक दिया है कि वो अफराद जो काम करते हैं एग्रीकल्चर में, खेतों में, उनके लिए ये पहली दफा है। अब आहिस्ता आहिस्ता और चीजें भी इन पे लागू हुई। तो जैसे आपने कहा कि जी तनख्वाह है, अब अनकरीब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है मिनिमम वेज का नफाज कर दे। मिनिमम वेज का नफाज ये है कि आजकल जो हमारे पास जैसे 17,500 रुपये मिनिमम वेज है, तो जो 17,500 रुपये मिनिमम वेज कोई फिक्स करें एग्रीकल्चर में। कोशिश है हमारी की, हुआ नहीं है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम, तो अगर मिनिमम वेज 17,500 मुकर्रर हो गई फिर मैं समझता हूँ कि ये जो मसला है ये शायद। मैं
مین جو ان کے ایشوز ہیں، میں نے جو زیادہ تر جو مین ایشوز ان کے، ایک تو ہیلتھ کا بڑا پرابلم ہوتا ہے فیمیلز میں. ظاہر سی بات ہے جب یہ ہیلدی نہیں ہوں گی تو کمانے جیسی نہیں ہوں گی. ان کا بچہ یعنی چھوٹی سی عمر میں، جس میں چائلڈ لیبر پہ بھی آ جاتی ہے بات، چھوٹی عمر میں وہ کام کرنے چلے جاتے ہیں. ان کا بچہ بھی کما کے وہ پورا نہیں، کیونکہ ان کے گھر کے حالات مطلب اتنا ہی ہوتا ہے کہ کھا لیتے ہیں اور پکا لیتے ہیں، پھر صبح وہی مزدوری. خاص طور پہ فیمیلس کو اس میں بڑا اگنور کیا جاتا ہے کہ ان کی اجرت بڑی کم ہوتی ہے میل کے مقابلے میں. تو ان کا سب سے بڑی ہیلتھ کا جو ایشوز ہے، تو میں چاہتی ہوں اس پہ تھوڑا ہائی لائٹ کریں کہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو کتنا فیسیلیٹ کیا گیا ہے. تھینک یو سر. دیکھیں آپ کے سوال کے 2-3 پہلوؤں میں ایک کے جواب. سب سے پہلے آپ نے بات کی خواتین کی ہیلتھ کی. ابھی ریسنٹلی پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہے کہ سوشل سیکورٹی جو ہے وہ علاج معالجے کی سہولت جو انڈسٹریل ورکر ہے ان کو ملتی ہے. لیکن گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے کہ سندھ صوبے میں جتنے لوگ بھی کام کرتے ہیں، چاہے وہ روزانہ کے دہاڑی دار ہوں، کھیتوں میں کام کرتے ہوں، جہاں بھی کام کرتے ہوں، ان سب کو رجسٹر کر دیا جائے سوشل سیکورٹی میں. جب وہ رجسٹر ہو جائیں گے، ایگریکلچر بھی عنقریب آنے والا، میں سمجھتا ہوں 2 سے 3 مہینے لگیں گے، تو پھر خواتین کا جو آپ کہہ رہی ہیں صحت کا مسئلہ یہ حل ہو جائے گا. کیونکہ سوشل سیکورٹی میں جو کام کرنے والا مزدور یا خاتون مزدور ہے اور اس کے فیملی ممبر، اس کا شوہر، اس کے والدین، اس کے بچوں کو فری علاج. جب یہ رجسٹرڈ ہو گئے سوشل سیکورٹی میں سمجھتا ہوں 3 مہینے سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. اس کے بعد آپ کا یہ مسئلہ تو حل ہو جائے گا. چھوٹی عمر میں جو بچیاں کام پہ چلی جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے تعلیم کا بھی ایشوز ہوتا ہے، وہ مطلب تعلیم بھی نہیں حاصل. میرا مین جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو اویئر نہ ہونے کی وجہ سے کہ تعلیم یافتہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی بچیاں کام پہ چلی جاتی ہیں، پھر چھوٹی عمر میں ان کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں، ان کو اویئر نہیں ہے. تو یہ تھوڑا قانون کوئی بنا ہے تو ان کو ہائی لائٹ کریں کہ بچیاں چھوٹی عمر میں، بچے یا بچیاں اسکول میں جائیں، نہ کہ وہ کمانے جائیں، کیونکہ ان کی اجرت صحیح ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی ان کے بچے پڑھنے لگ جائیں گے. تو ان کو اویئر زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. یہ میں بتا دوں کہ بدقسمتی سے پاکستان میں کم سے کم بچے کے کام کرنے کی کوئی حد مقرر نہیں تھی پہلے. ابھی ریسنٹلی 2015 میں آئی ایل او کے تعاون سے ہم نے ہمارے جتنے بھی جو لیبر لاز تھے ان کو ہم نے اپڈیٹ کیا تھا، ان میں امینڈمنٹ کی تھی، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد اب چاروں صوبوں نے اپنی قانون سازی خود کی ہے. تو اس میں ہمیں ایک موقع ملا تھا اور آئی ایل او کے تعاون سے لیبر ڈپارٹمنٹ، ورکرز، امپلائرز ہم سب بیٹھ گئے اور ہم نے نئے جتنے بھی قوانین تھے ان کو بہتر کیا. تو اس بہتری قوانین میں ایک قانون ہم نے بنایا جس کا نام ہے سندھ پروہیبیشن آف امپلائمنٹ ایکٹ 2017. اس میں ہم نے پہلی مرتبہ سندھ میں کم سے کم کام کرنے کے حد مقرر کی ہے، اس سے پہلے نہیں تھی. وہ ہے کہ 14 سال تک کا بچہ کوئی بھی کام نہیں کرے گا. کسی قسم کا کام نہیں کرے گا. 14 سال سے زیادہ، 18 سے کم عمر کا، اب ہم اس کو بچہ نہیں، ایڈولسنٹ یا لڑکا یا لڑکی کہتے ہیں، تو وہ کام کر سکتا ہے، لیکن کچھ پابندیوں کے ساتھ. پہلی پابندی تو یہ ہے کہ وہ 8 گھنٹے کام نہیں کرے گا، 6 گھنٹے کرے گا. دوسری یہ کہ وہ کسی بھی ہیزارڈیس آکوپیشن میں کام نہیں کرے گا، یعنی کوئی بھی ایسا کام جس سے اس کی صحت خراب ہو سکے. اور تیسرا، وہ اس ادارے میں جہاں وہ کام کرنے کے لیے آیا ہے تو پہلے وہ اپنا اسکول انرولمنٹ سرٹیفکیٹ پیش کرے. یہ 3 ریسٹرکشن کے ساتھ بچہ جو 14 سال سے اوپر کا وہ کام کر سکتا ہے. یہ 3 ریسٹرکشن ہے. تو اب اس سے امید کی جاتی ہے کہ چونکہ یہ ریسٹرکشن اب آ گئی ہیں تو بچوں پہ بھی کچھ تھوڑا سا کنٹرول ہو جائے. کم سے کم 14 سال کا بچہ جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا، اس سے بڑا کر سکے گا ان 3 ریسٹرکشن کے ساتھ. اور یہ سب چیزیں، یہ ہمارا جو 2017 کا پروہیبیشن امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ ہے، یہ ایگریکلچر کے لیے وہاں پہ بھی اس کا نفاذ ہوتا ہے.
السلام علیکم سر، میرا سوال یہ ہے کہ اگر جو اقلیتی برادری میں یا کسی کو کوئی غریب خاندان اپن دیکھ رہے ہیں، 14 سال کا بچہ اگر نہیں کمائے تو ان کی مجبوری بھی ہے، اگر نہیں کمائے تو وہ کیسے گھر چلے؟ وہاں پہ اکثر تو جو کمیونٹی، جو غریب کمیونٹی ہے، اس میں بڑے سے لے کے چھوٹا سے چھوٹا بچہ کماتا ہے، اگر نہیں کمائے تو وہ آج کل کے ماحول میں وہ گھر نہیں چلا سکتے، تو اس کا کوئی رائے عمل؟ جو سوال یہ ہے باہر جو کم کرے تو مجبوری ہے، انہیں کا سوا گھر کون تو ہلی سکے۔ تاں ہکڑی گال ٻڌايان، اسان سڀن جي ذهن ۾ گال ويٺل آهي ته غربت جي ڪري ٻار ڪم ڪندا آهن، اسان سڀ اهو ٿا سمجھون، يئي آهي ائين ڪونهي؟ غربت جي ڪري ٻار ڪم ڪون ٿا ڪرن، ٻارن جي ڪري غربت ٿي ٿي، یہ تھوڑے سوچڻ جي ڳالهه آهي، مان تव्हांکي ٻڌايان اسان سڀن جو اهو خيال آهي ته شايد ॿار ان ڪري ڪم ٿا ڪن جو غربت آهي، ائين ڪونهي، ॿار ڪم ڪري ٿو ان ڪري غربت آهي، ڪيئن مان تव्हांکي سمجھايندس؟ جڏهن ٿوري ٻار ڪم ڪندو تव्हां خبر آهي، جڏهن ٻار ڪم ڪندو آهي ان جي پگهار آهي گهٽ هوندي آهي، ٺيڪ آهي، مالڪ آساني سان ان کي ان ڪري رکي ٿو ته ان کي درڪا به ڏيندس، کم وٺندس ۽ پڇندو به نه، جڏهن اسين پنهنجي ٻارن کي کم لاءِ نه موڪلنداسون ته مالڪ جيڪو به امپلاير يا کم کندڙ مالڪ آهي ان کي کم ته ڪرائڻو آهي، ٻار نه موڪلنداسون وڏي ماڻهو کم ڪرائيندو، جڏهن وڏي ماڻهو کان کم ڪرائيندو ته پگهار ان کي وڌيڪ ڏيندو ٻار کان، ان ڪري اسان کي سوچڻ گهرجي غربت ته آهي پر غربت ختم ائين نه ٿيندي، غربت ختم ائين ٿيندي ته ٻارن کي پڙهايون، جڏهن اسين ٻارن کي کم ته نه موڪلنداسون ان جي जाइ ته وہ مانو جو کم کندڑا لینڈ لارڈ آ یا امپلائر وہ ضرور ॿियो माण्हू रखंदो ऐं जॾहिं ॿार कमु थो करे त जेको वॾो माण्हू आहे बेरोज़गार थो थिए, ॿारनि खे कढिबो त उन्हनि खे रोज़गार वधी वेंदो। ॿियो को सवाल? ॿियो को सवाल आहे था या अॻिते हलो? जी बिल्कुलु बिल्कुलु, जेतिरा वधीक सवाल पुछंदो ओतिरो सुठो। तव्हां सवाल कयो त ॿारनि खे पढ़ायूं, असां हिकु पहिरीं ॻाल्हि त असां वटि गुरबत आहे, असां उन तइलीम अॼुकल्ह हर शइ पैसनि सां आहे, उहो नथा असां ॻोल्हे पियूं। ॿी ॻाल्हि, असांजे ॻोठनि जी स्कूलूं तक़रीबन बंदि आहिनि, तक़रीबन जेकर असां आसे पासे कोट गुलाम अगरि ढेंगाण खां वठी कोट गुलाम अहमद ताईं 7 या 8 स्कूल अचनि थियूं, जंहिंमें सिर्फ़ु 1 या 2 स्कूल हलनि, बाक़ी सभु बंदि पयल आहिनि। असां कई दफ़ा जेको ऑफिसनि में वियासीं, धिका खाधासीं, सभिनी खे चयो मास्टर ॾियो, उनमें मास्टर बि न आहे, त हाणे उहो ॿार कीअं पढ़ंदो? हिकिड़ो असां वटि पैसो न आहे, ॿियो असां वटि स्कूल जेके आहिनि अवल आहिनि कोन, अगरि आहिनि त उहो बंदि आहिनि। हाणे उनजे लाइ छा करणु खपे? कंहिंखे दहाड़ो जेको असांजे स्कूल में दोबारा बहाल थियनि। महिरबानी। तव्हांजो सवाल ॾाढो मुश्किल आहे। ॻाल्हि इहो ई आहे त तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे त असां वटि प्रॉब्लम जेको आहे उहो इहो आहे, स्कूल त आहिनि पर उहे बंदि आहिनि, ऐं उन स्कूल में मास्टरनि जी पघार बि हलनि पियूं, उहे मास्टर घर वेही पघार बि वठनि पिया, इहे सभु थिए पियो। हाणे इन खे कीअं ख़तमु कजो, इहो ॾुखियो सवाल आहे। बिल्कुलु सही तव्हांजी ॻाल्हि। ऐं जेकॾहिं सभई स्कूल हलनि, छो त सरकारी स्कूल आहिनि उनमें पढ़ाई फ्री हूंदी आहे, त हर ॿार पढ़ी वेंदो, ऐं जॾहिं हर ॿार पढ़ी वेंदो अरे सर जो सवाल तमामु सही आहे। काफ़ी एरिया में तमामु घणा गैप आहिनि स्कूलनि में, उन स्कूल न आहिनि, त उनमें जेको आहे ग़रीब कम्यूनिटी एतिरो करे कीअं पंहिंजे ॿार खे मोकिले पढ़ण जे लाइ, इहे उनजे लाइ वॾा इशू आहे। बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे त जेके स्कूल आहिनि बंदि आहिनि, मास्टर अचनि कोन था, बंदि पिया आहिनि, इन करे ॿार पढ़ी कोन सघंदा, ऐं तमामु परे परे स्कूल आहिनि त नंढनि ॿारनि खे होॾे मोकिले कोन था सघनि, इहो त बिल्कुलु फैक्ट आहे। बसि कोशिशि कयूं था असां भई तमामु मिली, जेके उनजा स्कूल जा जेके वॾा हुजनि, जीअं डायरेक्टर स्कूल जा, उते दरख़्वास्त जेको कंप्लेन वक्लेन कजे, उनखे चओ पघार वठो था अचो, सॼो हफ़्तो नथा अचो, घटि में घटि 2 टे ॾींहं अचो, ये करे कुछ क्यों था मैं ये था।
असांजी ज़रात जेका आहे हींअर साल या ॿोॾियुनि में बि बर्बाद थी वञे थी। असां वटि जेको कमु करे थो हारी उहो बचड़ियाल बि आहे, ग़रीब बि आहे, सभु कुझु आहे। हुनखे असां पंहिंजे घर जा पैसा ॾेई ऐं हुननि जो जेको सो हिफ़ाज़त बि करियूं था, हुनखे खाधो खुराक ॾियूं था। ऐं असां ज़मीदार जेके आहियूं उन्हनि वटि त का शइ कोन्हे, सिर्फ़ु फसल काथा। हाणे ज़रात जो अघु कोन्हे। जीअं हाणे असां हिन खां अॻु में टमाटो 200 रुपया किलो वरिता, जेको असांखे जॾहिं लथो आहे 40 रुपया थी वियो, इहो अव्हांखे ख़बर हुजे। ऐं बसर जो जेको आहे सो हींअर 40-50 रुपया ते हले पियो। ऐं पहिरीं अची वठंदासीं 70-80 100 ताईं। हाणे जेकॾहिं असां हारी खे उहो कर्ज़ बि ॾियूं ऐं सुभाणे हारी चए थो मूं ते कर्ज़ थी वियो आहे ऐं इहो आउं कोन थो भरियां, बाबा तोखे ॾिनो आहे असां पंहिंजे जेब मंझां। ऐं अखर असांजी जेकॾहिं ज़मीदारी आहे उनजो बि अधु अव्हां खणो था, अधु असांखे था ॾियो। ऐं उन खां बाद में जेकॾहिं उहो कंपनी में या कंहिं कोर्ट में पहुचे थो, ज़मीदार ते दहाए थो, ज़मीदार जो कर्ज़ ॿुॾे थो, ऐं उन खां वधीक ज़मीदार जेको आहे सो जेल जूं सुनवायूं ॾेई ऐं पंहिंजी जेका ज़िंदगी ऐं पंहिंजे औलाद जो जेको आहे सो बर्बादी करे थो। ऐं इन जे लाइ असांखे कानून ऐं असांखे ज़रात वारो करे हिफ़ाज़त ॾेई सघो था। तव्हांजे जेके सवाल आहिनि उहे ॿ आहिनि। पंहिंजो क्वेश्चन मां हिकिड़ो जवाबु ॾियां। हाणे गवर्नमेंट रिसेंटली शुरू कयो आहे त जीअं तव्हां ॾिठो हूंदो वॾनि शहरनि में घर हूंदा आहिनि, दुकानूं हूंदियूं आहिनि, फैक्ट्रियूं हूंदियूं आहिनि, उनखे इंश्योर कबो आहे। उन्हनि जी इंश्योरेंस थींदी आहे त कॾहिं ख़ुदा न ख़ास्ता बाहि लॻी वञे या का बि अहिड़ो प्रॉब्लम थी वञे त इंश्योरेंस कंपनी पैसा भरे ॾींदी आहे। गवर्नमेंट इहो कोशिशि थी करे त जीअं दुकानूं, ऑफिसूं ऐं फैक्ट्रियूं इंश्योर थींदियूं आहिनि, उन ई तरीक़े सां जेके औरतुनि जी या ज़मीनदारनि जी जेके फसलूं आहिनि उन्हनि खे बि इंश्योर कयो। इहो गवर्नमेंट हिकिड़ो ठाहे इहो थी वेंदो त ख़ुदा न ख़ास्ता जेकॾहिं बोर्ड जे करे या कहिड़ी बि शइ जे करे फसल ख़राब थी वञे त उहो कंपनी तव्हांखे पैसा भरे ॾींदी। त हुन में ईअं थी वेंदो त जेको अदद ज़मीनदार खणंदो आहे ॿिन्हिनि खे अदद पैसा मिली वेंदा, उन जा पैसा उॾंदा। हिकिड़ो त ॿियो तव्हांजो कहिड़ो सवाल हो? जी जी, कोर्ट में पहुचो, बिल्कुलु सही। उन में इहो बिल्कुलु तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे त हीउ तमामु ॾुखियो आहे। थींदो छा आहे त जेको ज़मीनदार आहे हू वर्कर खे पैसा एडवांस ॾिए थो। इहो तव्हांजी ॻाल्हि बिल्कुलु सही आहे। कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे त भॼी बि ईंदा आहिनि, जाम भॼी वेंदा आहिनि। त जेको हुनजा पैसा आहिनि ॻाल्हि मां साम्हूं थिए ख़बर पइबो आहे, हर महीने में ख़र्चो ॾियंदा। उन बावजूद जेको ज़मीनदार भाण बीज वठे थो करे उहो बि त सेठ त कोन थो छॾे न। हाणे उहो ज़मीनदार बिल्कुलु इन करे बिल्कुलु पोइते वञे थो ऐं हारी खे हर महीने में नथो ॾिए त बनी बि कोन थी थिए। इन लाइ हिकिड़ो अहिड़ो कानून हुजे या अहिड़ी का शइ ठाही वञे जंहिंजे लाइ अगरि को केस करे थो त ॿिन्ही धुरनि खे घुराइनि। अगरि ॿी का बि शइ नथी थिए त उहो कोर्ट में केस पसंदि खणे न, जंहिंजे आधार ते उहो अॻियां माण्हू छॾे सघे। इहो कोन थो थिए। इन लाइ अमल कयो वञे ज़मीनदार लाइ त माना नंढी ज़मीनदारी लाइ बिल्कुलु तबाह थी विया आहिनि। फसल बि कोन थो थिए, ख़र्च बि वधीक आहिनि ऐं पाणी जा मसइला बि आहिनि, हारियुनि जा बि आहिनि। इन लाइ को अहिड़ो कानून अहिड़ी का शइ ठाही वञे जंहिंजे लाइ उहो ज़मीन तबिके जो ज़मीनदार आहे कुझु पंहिंजे पेरनि ते बीह सघे। मुंहिंजो जेको अॻिते पे हले सवाल में पुछी छॾियो, मां ॿुधाए छॾियां। थींदो छा आहे त तव्हांजी ॻाल्हि त जेको तव्हांजो ज़मीनदार ऐं वर्कर जे विच में उन जे विच में जेको तनाज़ो थिए थो उन में हिकु धुर खे सॾनि था, ॿिए खे नथा सॾनि या ॿिन्ही ॻाल्हि नथा सॾनि। पोइ थींदो इन करे आहे त जंहिं कोर्ट में जंहिं हंधि फ़ैसिलो वेंदो आहे उनखे तव्हांजे मामले जी ख़बर न हूंदी आहे। इन करे जेको सिंध इंस्टीट्यूशन एक्ट 2013 आहे, इन में ख़ासि अदालतूं रखियूं आहिनि जेके असीं लेबर कोर्ट चवंदा आहियूं। हीअ आम अदालत में तव्हांजो केस न हलंदो। कंहिं बि ज़मीनदार ऐं कोरे जे विच में को तनाज़ो आहे, पैसनि जो हुजे, पघार जो हुजे, जेको बि आहे उहो लेबर कोर्ट में हलंदो। उन में इहो फ़ाइदो थींदो जेके जज हूंदा आहिनि उन्हनि खे तव्हांजे हालत जी ऐं वर्कर जे हालत जी ॿिन्हिनि जी ख़बर हूंदी। इन करे अॻु में जेको हूंदो आहे न भाई हुते इहो बि शर्त आहे त ॿिन्हिनि खे सॾंदा, हिकिड़े सां फ़ैसिलो कॾहिं बि न थींदो।
ठीक है जो सिस्टम ठहियल आहे न, छा त अॼुकल्ह जे ज़मीदार पैसा ॾिए थो हारी खे 2-3 ॾींहंनि खां या धंधेदारी के त नमूनो थिए थो त हू डायरेक्ट कोर्ट में वञे थो। कोर्ट में इहो त लिखी ॾींदा भले अॼु पैसा 5 लख रुपया ॾियो, सुभाणे चवंदा आहियूं भरी आयो। हाणे भरीअ बि ज़मीदार खे न वञे, उन खां बिल्कुलु इहो तरीक़ेकार हुजणु खपे त जेकॾहिं का बि शइ पैसा खणे थो करे थो, हुनजो रिकॉर्ड ॾिसो, अव्हां वटि लिखियल आहे, अव्हां वटि वरितल आहिनि, पैसा केतिरा खया आहिनि, फुसलो अव्हां जो केतिरो थियो, उहो यकतरफ़ो फ़ैसिलो थिए थो। उन ई आधार ते अहिड़ो को कानून न पुठे बि कोन थो सघे, न को केरु करे सघे। ऐं सेठ को रुपयो बि छॾण लाइ तयारु कोन्हे। ऐं अॼुकल्ह त वरी व्याजनि जो दौरु लॻो पियो, हर ॿोरी पाण जी खणी ससुर माण्हू खां ठोके वठी छॾींदा। उन जे करे इहो असांजो इलाइक़ो हिकिड़ो अॻे पाणी कोन्हे, ॿियो इहो हरनि जा मसइला आहिनि, टियों वरी फसल न थिए, पोइ छा कंदा? पोइ बिल्कुलु ज़मीदार जे हथ करणी पई आहे, त मजबूरी पिनण वारो सिस्टम रखियो। बिल्कुलु तव्हांजी ॻाल्हि त केपर में वञी वेही था रहनि, ऐं वरी कुझु माण्हू उनखे एक्सप्लॉइट बि कंदा आहिनि, उनजो नाजाइज़ फ़ाइदो वठंदा। काम रेज़ एक्चुअली छा आहे, ॾिसो अॼु असां तव्हांखे इन करे छॾियो आहे त रुगो जेके कमु कंदड़ पोरियत आहिनि उहे न, पर जेके मसइला ज़मीदारनि जा आहिनि उहो ख़बर पए असांखे। ठीकु आहे न, इन खां पहिरीं थींदो छा आहे त जेको पोरियत हूंदो आहे उहो तव्हां ॾींदो आहे मां ग़रीब आहियां, ज़ुल्म ते वियो, हाय घोड़ा त माण्हू हर को उन्हनि जी ॿुधंदो आहे। असां इन करे तव्हांखे सॾियो आहे त तव्हांजा जेके ज़मीदारनि जा मसइला आहिनि उहो बस कीअं रिज़ॉल्व थिए। जीअं पोरियत पंहिंजी ठाहे सघे थो ट्रेड यूनियन, ईअं तव्हां ज़मीदार पंहिंजी एसोसिएशन ठाहे सघो। तव्हां ज़मीदार मिली वेंदो, उहो पंहिंजी एसोसिएशन तव्हां बि ठाहे था सघो। ये ज़मीन को पोरियत ठाहे थो पंहिंजी ट्रेड यूनियन अंजुमन साज़ी करे थो ऐं मज़बूत थो थिए, ईअं ज़मीदार बि मज़बूत थी सघे थो। त तव्हां ॾिठो हूंदो हिकिड़े माण्हू जी आवाज़ कोन थो ॿुधे, पर जॾहिं 15-20 माण्हू गॾिजी था बीहनि त हर को आवाज़ ॿुधे। गवर्नमेंट को तव्हां ॾिठो हूंदो त जेके आम माण्हुनि जी शायदि एतिरी पहुच न हुजे, पर को ट्रेड यूनियन आहे, का फेडरेशन आहे त हुनजी पहुच ईअं तव्हां बि पंहिंजियूं एसोसिएशन ऐं फेडरेशन ठाहे सघो त उन में तव्हांजी आवाज़ ॻाल्हि में जी आवाज़ में वज़न हूंदो। ऐं ॿी ॻाल्हि जेकी तव्हां चयो, लेबर कोड हमेशह छा थींदो आहे त तव्हां में वर्कर में को तनाज़ो थींदो। उन जे लाइ मां तव्हांखे हिकिड़ी शइ ॿुधायां थो त हिकिड़ो त वर्कर जेको आहे, जेके ट्रेड यूनियन में आहे, कलेक्टिव बार्गेनिंग करे माना ऑफिस बेरर आहिनि, उहो मिली तव्हां सां को ॾे वठि कंदा। दौर में जेको इहो आइन ठाहियो वियो त उन्हनि हारनि खे टका बि चवंदा जेका असां एडवांस न ॾियो। ऐं जेकॾहिं असांजो हारी बचनि जी मिसाल आहे, हू पंहिंजी नियाणी उथारे थो या को हुनजे फसल वग़ैरह नथो थिए, हू बुख मरे थो, त असांखे कुदरती हिकिड़ो असां इंसान जे नाते सां असां हुनखे उहो जेको हुनजी पूरी करियूं था। जेकॾहिं कोर्ट में वञूं था त बाबा टका बि छो ॾिनी, अवा माए वारो पघार ॾियो, अवा जेको वधीक पैसा छो ॾिना, ऐं असांखे इहो सवाल थो चयो वञनि था, ॿियनि जे लाइ असांखे कुझु न थिए। बिल्कुलु तव्हांजी ॻाल्हि थिए छा थो त पुलिस जेको आहे हू मथे वञी सभिनी जी आॾो पंहिंजे पाण खे मज़बूत थो सम्झे त मूं सां ज़ुल्म थी वियो। असीं चाहियूं था त पुलिस हुजे, हुन सां गॾोगॾु तव्हां जहिड़ा जेके ज़िमेदार आहिनि उहो इन्हनि खे हिकु ते विहारे जेकी हू ॻाल्हि थिए पई उन में इहो तरीक़े सां आहे। मिसाल तौर तव्हांजे तनाज़ो थी वियो, ठीकु आहे, मिसाल तौर उन तरीक़े सां लेबर डिपार्टमेंट में हिकिड़ो अफ़सर हूंदो आहे जेके चवंदा आहिनि कंसीलिएटर। उनजो कमु ई हूंदो आहे त ॿिन्हिनि धुरनि खे सॾे टेबल ते विहारे ॿिन्हिनि खे पुछे, वर्कर खां पुछे बाबा तुंहिंजी कहिड़ी तकलीफ़ आहे, छा प्रॉब्लम आहे, ज़मीदार खां पुछनि ऐं ॿिन्हिनि में वेही कोशिशि कंदो त क़बूल करे वठो। कॾहिं ईअं थींदो आहे त ॿई धुरूं क़बूल न कंदियूं, पोइ छा थींदो आहे त उहो फ़ैसिलो जेको कंसीलेटर आहे उन जा ॿ तरीक़ा आहिनि। हिकिड़ो त हू इन खे आर्बिट्रेटर वटि मोकिले छॾे, पोइ हिकिड़ो माण्हू अहिड़ो हुजे जेको असांजो फ़ैसिलो हू करे वठी वेंदा आहिनि पंहिंजो फ़ैसिलो। ईअं उहो आहे कंसीलेटर पुछंदो ॿिन्हिनि घुरनि खां बाबा तव्हां ही चाहियो था
फलाणे माण्हू फ़ैसिलो उन खां करायो हिकिड़ो तव्हां उहो क़बूल नथा कयो पोइ उन खां पोइ ॿियो इहो थिए थो इहो मसइलो जेको आहे हू ॾियारे मोकिले लेबर कोर्ट कर थिए थो त हू डायरेक्ट कोर्ट में वञी पुॼे थो पुॼण जो मक़सदु इन करे हुन 20,000 का वकील खे ॾिना हू सॼो कमु ठाहे छॾियो सुबुह जो धणी घर मां उथे ई पवंदो त हुनखे अॻे ई बस पुलिस कार्रवाई बाबा हलो खणी वञे पोइ हुनखे न पुछणो न को ज़मीदार जवाबु ॾींदा हाणे छा थो हुनखे ॿिन्ही धरुनि खां जॾहिं हिकिड़ो माण्हू ख़र्च पको ॾिए थो करे थो ॿिन्ही धरुनि खे रिकॉर्ड पाए हुन पैसा बि लिखियल आहिनि हर शइ हॉस्पिटल ते तव्हांखे पाण ख़बर त हालात अहिड़ा आहिनि हर महीने में 4 खां 5,000 रुपया खणे थो न यूनिट ठाहे सघे थो वरी यार कुझु थियल न वटि तइदाद न हू लेबर रखी सघे थो पर हिकिड़ो अहिड़ो तरीक़ोकार या अहिड़ी का शइ हुजे जेको माण्हू हुनखां पहिरें जी फर्क़ टका बि ॾिए थो हुनखां लिखाए वठे थो हुनजी अहमियत त अॻियां हुजे त बाबा हीअ शइ हीअ सबूत ठीकु आहे वरी जॾहिं पैसा वठे थो या का शइ करे थो हुन खां पुछणो थो हुजे हाणे वकील खे 20,000 रुपया मिली विया वकील सभु कमु करे ॾियो कोर्ट में बिल्कुलु हुनजो ऑर्डर अची वियो पोइ जेको शइ लिखाए भले अॼु करे चाहे सुभाणे करे ठीकु आहे दादा असांजी ॻाल्हियूं हलंदियूं रहंदियूं तव्हां सां जीअं ज़िक्र कयो त असांखे इस्लामाबाद मां ILO जी आहे पंहिंजो कंट्री ऑफिस डायरेक्टर नालो आहे इनग्रिड क्रिस्टनसन उहो हाणे लाइन ते अची वई आहे त असीं पहिरीं हुननि खां तव्हांखे ॻाल्हाईंदासीं पोइ असांजी ॻाल्हियूं पिए हलंदियूं कंट्री डायरेक्टर आहे इस्लामाबाद में रहंदी आहे ऐं माई जो नालो आहे पंहिंजो इनग्रिड क्रिस्टनसन ILO जी हिते चीफ आहे पाकिस्तान में इस्लामाबाद में ऑफिस आहे उतां सां ॻाल्हायो Good afternoon, assalamu alaikum, everybody. Yeah, hi, it's Ingrid. Hi. Yes. Okay, so I'm just waiting until it. Okay. And you will translate for me? Okay. Perfect. Okay. Thanks. Yes, Ingrid, now you can start, please. Okay, and we are not waiting for Mr. Saki to join as well? Okay, so assalamu alaikum everybody, and also on behalf of the ILO country office, I welcome you to this awareness raising seminar on fundamental principles and rights at work. मां ILO जे आधार ते तव्हां सभिनि खे खुश आमदीद थी चवां त तव्हां जिते गॾु थिया आहियो And I wish you all a happy new year. I know well that 2020 was not an easy year for many of us because of the COVID, maybe because of the drought or the flooding, and we can only hope that 2021 will be better. सभिनि खे नए साल जी मुबारकबाद हुजे जेको नओं साल गुज़रियल आहे पुराणो ॾींहुं बि उहो तमामु ॾुखियो हो पर असीं उमेद कयूं था जेको नओं साल आहे त हू गुज़रियल साल खां इंशाअल्लाह बहितर हूंदो I hope that all your families are well and that your business and your cotton fields are going very well. मूंखे उमेद आहे त तव्हांजा सभु घर वारा ठीकु हूंदा ॿार बच्चा सभु ख़ैरियत सां हूंदा
इंशाल्लाह आंदा करियो पर आंदा. It is a very important crop for Pakistan. Pakistan is one of the greatest or the largest producer of cotton, and you also have a big textile industry. So your business is very important for yourself, but also for Pakistan and Sindh. देखो कॉटन जो बिजनेस आहे जो पाकिस्तान कुछ वॾनि मुल्कनि में शामिल आहे जंहिंमें कॉटन टेक्सटाइल जो बिजनेस हले थो ऐं इहो न रुगो तव्हांजे लाइ ख़ुशहाली पर तव्हांजे मुल्क लाइ ख़ुशहाली आणे सघे थो. So thanks for that. तव्हांजी वॾी महिरबानी. But we also know from our experience working in Pakistan and in other countries that sometimes the conditions that you and your workers are working under are not always ideal. It's not always what we call decent work. तव्हांखे इहो ख़बर आहे त तव्हां जहिड़े हालतुनि में कमु था कयो उहे सुठियूं हालतूं न आहिनि. असां चाहियूं था त तव्हांजी जेकी वर्किंग कंडीशन जे माहौल में तव्हां कमु कयो था उनखे वधीक सुठे नमूने सां बहितर ऐं इम्प्रूव कयो वञे. Many of you who are sitting in the room here are maybe already aware of it. Maybe then share with your other fellows what you are doing to also make the work more decent, make it better. तव्हां जेको कयो था तव्हां पाण जो सोचंदो ऐं पंहिंजे ॿियनि माण्हुनि खे दोस्तनि खे फैमिली मेंबर्स खे इहो ॿुधाईंदो तव्हांजो जेको कमु आहे तव्हां जेका वधीक बहितर करे सघो था. And this includes making sure that children are not doing hazardous work. ऐं तव्हांखे जो ध्यान में रखिणो आहे त तव्हां को बि अहिड़ो कमु न कयो जेके कम जे दौरान तव्हांजी सिहत जिस्मानी सिहत ऐं ज़हन लाइ नुक़सान न हुजे. That all the workers are there freely and can also leave freely, meaning there are no forced or bonded labor. That there are decent working conditions both for men and for women. And that workers and you as farmers can form and join associations or trade unions as you wish. These 4 principles are what we call fundamental principles and rights at work. But there's also another element or another part of decent work that are very important to all of us. This concerns safety and health.
صحت کے لیے نقصان کا ہوگی تاکہ انہیں میں تمام احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. It is very important that both you and your workers and all who work in the fields can remain healthy, are safe at work, and this means that they don't have accidents that prevent them from coming back to their families in the evening. तव्हां जॾहिं कमु करण लाइ वञो था त तव्हां पंहिंजी सिहत ऐं सफ़ाई जो ख़्यालु रखिणो आहे त को बि कमु न थी थिए जेको तव्हांजी सिहत लाइ नुक़सानकार हुजे ऐं तव्हां जीअं सुबुह जो घरां निकिरंदा आहियो कमु करण लाइ त वापसी बि ईअं ख़ैर सां अचो का बीमारी या का धक न लॻण हुअणु घुरिजे छो त तव्हांजा जेके घर वारा चाहिनि था जीअं तव्हां सुबुह जो वञो था वापसी तव्हांजी उहे थिए. Or become sick after some time in the field. For instance, if you or others are working with pesticides, then we can get sick of that. If not, if we do not take care. तव्हां जॾहिं बि पंहिंजे खेतरनि में कमु कंदा आहियो त हुते तव्हांखे जेके दवाऊं छिड़कंदा आहिनि पेस्टिसाइड उहो तव्हां इस्तेमालु कंदा आहियो त तव्हां जॾहिं जेको माण्हू उहो दवाऊं इस्तेमालु करे हुनखे खपे त तमामु एहतियात सां कमु करे हथ में प्रॉपर ग्लव्स हुजनि या मास्क हुजे त तव्हांखे उहो जेके केमिकल्स आहिनि जेके तव्हां दवाऊं छिड़कंदा आहियो उन नुक़सानकार न थियनि. It is important that you and your workers are well aware of the safety and health risks that are there. I'm sure you know a number of them, and I'm also sure you know how to protect yourself and your workers. तव्हां खेतनि में कमु करण लाइ वेंदा आहियो त हुते पंहिंजे जिस्म खे कीअं नुक़सानदार शयुनि खां बचाइणु घुरिजे पंहिंजे पाण खे या तव्हां सां गॾु जेको बि हुते खेतनि में कमु कंदो आहे उनखे कीअं महफ़ूज़ रखे. मां सम्झां थी तव्हांखे ईंदो हूंदो ऐं जेकॾहिं हिन में घटिताई वटिताई आहे त अॼु जेकी प्रेज़ेंटेशन हलंदी हुन में तव्हां अञा वधीक ॻाल्हियूं सिखंदा. But as farmers or employers and the one who lead the job, or then it is important that you take the lead in ensuring that everybody can work safe and without risk to their health. खतरो न हुअणु घुरिजे को बि रिस्क न वठो ऐं इत्मीनान सां कमु कयो को बि अहिड़ो कमु न कयो जेकी तव्हांजे लाइ या तव्हां सां गॾु कमु करण लाइ नुक़सानकार हुजे. And this may not be difficult. I'm sure you among yourself know many ways how to avoid an accident. For instance, if you are having a small tractor or machine, that if there is a pulley or there is a power transmission, that it can be proper guarded so that nobody, neither you, your workers, or even children that are playing, can get their fingers into this pulley. शइ कटण वारी आहे हार्वेस्ट हूंदो आहे ऐं ट्रैक्टर यूज़ थींदा आहिनि त तव्हांखे खपे त तव्हां पंहिंजे पाण खे बि महफ़ूज़ रखो तव्हां सां गॾु जेके ॿिया कमु कंदड़ आहिनि उहो बि सभु महफ़ूज़ रखनि ऐं पंहिंजी ग़लती सां कंहिं मशीन में पंहिंजो हथु या पेर न ॾेई ख़्यालु करणु घुरिजे. Or it can be that you need some rest so that you can get your back stretched. So a proper rest place, maybe under a tree, can be a very good thing also for your health and for those of your workers. कम करण जे दौरान तव्हांखे पंहिंजी सिहत लाइ ऐं कुझु कलाकनि खां पोइ आराम करणु घुरिजे
छो त जेसि ताईं तव्हां फ्रेश हूंदो सुठो कमु करे सघंदो, न त जेको फ्रेश न हूंदो थी सघे त को हादसो थी वञे। ऐं उन ॾांहुं बहितरीनु जेके जाइ तव्हां छो त एग्रीकल्चर में कमु कंदा आहियो, कंहिं बि वण जे हेठि वेही तव्हां कुझु देरि लाइ पंहिंजे पाण खे तरोताज़ा करे सघो था। And if you and your workers can avoid being sick or having an accident, being injured, then you can continue your work, and for many of your workers also earn a living. If we are sick, we cannot necessarily work, or if we have an accident, that may also be difficult. तव्हां जॾहिं कमु कयो अचो त इहो ॾिसो त तव्हांजी सिहत ठीकु हुजे। तव्हांजे करे बुखार आहे या तव्हांजो बदन सुस्त आहे त कमु कंदो त को बि एक्सीडेंट थियण जो ख़तरो थींदो आहे। इन करे जॾहिं कम लाइ अचो त पंहिंजे पाण खे सिहतमंद ऐं तरोताज़ा रखे अचो, जो एक्सीडेंट जो घटि में घटि अंदेशो रहे। So therefore, it is important that all of us, you, your workers, and others that are there, including the employers organization, and I want to thank also the EFP, I will come back to that, for organizing this event here. That it is important that everybody is well aware of the risks and what can be done to prevent them. तव्हां तव्हांजी वरी हिकिड़ी दफ़ा ॿिए भेर शुक्रगुज़ार आहियां त तव्हां कुरियत ऐं जेके स्मॉल लैंड वारे सभु आया आहियो ऐं सारी ॻाल्हि ॿुधो पिया ऐं इन शयुनि खां पोइ तव्हां वधीक बहितर पोज़ीशन में हूंदो जो पंहिंजे पाण खे केर नुक़सान सां बचाए सघो। So this is the very, you can say, purpose of this meeting, which is organized under a project that is being funded by Inditex, one of the, you could say, buyers of Pakistan textile. It's organized under one of the projects that they are funding. तव्हां सभु मज़दूर ऐं जेके ज़मीनदार कमु कंदड़ उन्हनि लाइ कोशिशि करे जो तव्हांजा पाण में हालात सुठा हुजनि ऐं तव्हांजी सिहत ऐं तंदुरुस्ती बिल्कुलु सही हुजे। And they are also concerned about your and your workers' safety and health, and that there is decent work in the cotton farms. असां सभु तव्हांजी सिहत ऐं तव्हांजे ॿारनि जी सिहत लाइ हमेशह फ़िक्रमंद रहंदा आहियूं त तव्हां जॾहिं कमु थिए थो त सुठे नमूने सां कयो ऐं कंहिं क़िस्म जो को हादसो न थिए ऐं इन लाइ असीं तव्हांजो हमेशह ख़्यालु रखंदा आहियूं। And we are very happy to also be able to organize this in cooperation with the Employers Federation of Pakistan, who's active also in the farming area and are seeking to promote fundamental principles and rights at work, as well as safety and health. मां शुक्रगुज़ार आहियां एम्प्लॉयर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जी जेके हिते तव्हां वटि आया आहिनि ऐं सभु ॻाल्हियूं तव्हांखे ॿुधाइनि था। मां उन्हनि जी शुक्रगुज़ार आहियां त हू आया आहिनि ऐं तव्हांखे इहो सभु ॻाल्हियूं ॿुधाइनि था। So with this, I want to end up thanking you all for coming to this meeting. I want to extend our sincere gratitude to the Employers Federation of Pakistan for organizing this in Mirpur Khas, I believe you are. I have been to your city. I would like to, town. I would like to come there again. You have a beautiful area. So I would like to thank everybody of you for also joining this afternoon or this morning. सभिनि जो वरी ॿिए भेर मां शुक्रिया अदा कंदुसि त तव्हां सभई हिते पंहिंजो कीमती वक़्तु कमु छॾे आयो ऐं हिते कमु कयो। मां तव्हां सभिनी तमामु घणी शुक्रगुज़ार आहियां ऐं दिली मुबारकबाद थी ॾियां। Mr.
Fasil Karimi Siddiqui wants to say something from him. Yes. Okay, but I'm also ready. So have a nice afternoon, and thanks to all the resource persons also, and to my colleague who is there, Ijaz Ahmed. So thanks to you, Mr. Gulfam, for translating, and thanks to all the resource. Also, Mr. Naqvi is there. Thanks very much. Indeed, I'd like to thank you on behalf of the Employers Federation of Pakistan for making yourself available to address the gathering. I'm happy to inform you that after the first Farmers Landlords Association, which was formed 4 years before, today we are making the second very important Farmers Landlords Association at Port Ghulam Mohammed. And the office bearers of the union are present in this meeting, and they would like to extend their greetings and good wishes to you. And we hope that this union, along with the earlier existing union together, will be able to work for the promotion of welfare of the farmers and landlords and improvement of their productivity. I'd like to thank you for your presence. On behalf of all these participants, the Mohammed and Mr. Nizam, they all are thankful moved to welcome you. Thank you. Thank you very much. Ingrid, let me ask please if participants have any question or want to say anything, please. Can you wait for 2 minutes, please? Yeah, I can do that. That's fine. आपको लेकर इंग्लिश का कुछ सवाल या सवाल जान सकते हैं फिर मां गाल पुटो ऐं असां तमामु शुक्रगुज़ार आहियूं त कोट गुलाम मोहम्मद में असां शुक्रिया अदा कयो It's Mr. Chair Mohammed, one of the small landlords of Port Ghulam Mohammed. He wants to thank you your address. Thank you. Kamu kereta tegari dia, sekria, nanda bala bersama hari. Pada aja kalau buat madu aja, mani kereta dalam dimana? Ini gone. Indeed, Ronnie wants to thank to you, and he is also complaining that his husband is ill and he's not in a position to work in the field. Okay, many thanks. I can't hear sort of entirely if there is a question, but I assume, Ijaz, you would also share maybe over phone if need be. But it's great to hear that you hopefully find this seminar useful. And I look forward also to hear and to see more pictures also from the event. And hopefully again I would be able to come down and see some of you, and maybe some of you I have met before when we were working with under what we call the LRP project. It was about restoration of livelihoods after the flooding in 2010 and 11. Thank you so much, Indra. Thank you so much. Okay, thanks very much, and have a nice afternoon, and take good care. Take really care of yourself also in the wake of the COVID-19. We want everybody to be healthy and stay safe. Yes, everybody is wearing masks and we have sanitizers here. Okay, very good, very good. Very good. Thank you so much. Okay, bye-bye, bye-bye, bye-bye. We have yeah. Director Livestock here. He also wants to Okay, fine.
अस्सलाम वालेकुम। मुझे सवाल ये हुआ कि जगह पे पैदावार लान दिया तो उनको रेट तमाम कर का पैदावार एरिया के हिसाब से जगह का पैदावार का उत्पत्ति का लान दिया जी मिसाल पांचो टमाटर ने बसर ने जब जो रेट तमाम घट हुआ उनका पेरी जो जो रेट तमाम हाई कर ये वाले सा को काम को राय में बायोरिच है। अस्सलामुअलैकुम। आपकी बड़ी मेहरबानी जो हमारे इलाके में ताल के जमसाबाद कोट गुलाबाग में ये सेमिनार करवाया है। यहाँ क्या है जो लोगों में ये जो अवेयरनेस बढ़ेगी और इससे आप सेमिनार करवाते रहेंगे तो मेरे ख्याल में तो ये जिला हिब को खास पे तरक्की होगी और ये कुछ ऐसे क्वेश्चन भी कर रहे हैं। ये जो है अवेयरनेस आ गई है इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट टाइम जब यहाँ नेक्स्ट टाइम होगा सेमिनार तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ हमारे आदमी क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करना मीन्स अवेयरनेस बढ़ना इंशाल्लाह ताला। ये जमसाबाद और जो भी जिले के तालुकाज हैं डिस्ट्रिक्ट हिब खास में इंशाल्लाह ताला ये तरक्की करेंगे। थैंक्स। Yes, Ingrid, he is thankful to you and he is saying that this is sort of formal association is being established first time, especially in this field, and he is very happy and he is willing to cooperate with the project and ILO, and he is thankful again to ILO and ambassadors for Pakistan. Thanks very much to him and to all who are helping to organize that, the leaders in Mirpocast, etc., for also supporting this. Thanks to everybody. Thank you so much, Ingrid. Thank you so much. Have a great day. Yeah, the same to you. Take care. Take care. मैं दोस्तों में निर्मित करके रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा रह गया है वो खत्म कर लें। Then we will have another presentation और उसके बाद फिर हम मंच कर लेते हैं। शुक्रिया। जी बात। आज सवाल में मुझे जो प्रेजेंटेशन जाती है वो सब इसी में यूमान का सिक्का पास विधान दस्ता है। जगह तो तनाज़ुर थे जो जिम्मेदार हैं मुझे कम पूरे काम में तनाज़ुर थे पूरे लाए स्पेशल कोर्स या जैसे लेबर कोर्स चलना है उन्होंने उनके खबर दिया जमींदार के लिए मुश्किलों और तेरी प्रॉब्लम गाय हैं जो पूरे का मुश्किल है इन्हीं तरह उन्हें जे तनाजुर में ताज केस को करना है ताज हर तरह का प्रॉब्लम थी ये ताज का ट्रेनिंग या ताज के साथ प्रॉब्लम है तो ताज जो पेरे मसलो अच्छे लेबर डिपार्टमेंट में कंसीडरेटर वर्क खुद देख कर है तो कम है तो ताज बिल्कुल जरूर के जो हक हुआ तो वो लेबर को की अप्रोच कर सके तो लेबर को ताज बिल्कुल की गाड़ी को बंद को पानी को फैसले मैंने तेरे आज का वो ताज का प्रॉब्लम मुझे ध्यान में रखो सब इनका मेरी लेबर डिपार्टमेंट ये हमारी ऑफिस भी को पास में आए तो पहले हमने तो बनी ना मनी से बोलता था ठीक है आप बिल्कुल आसान से ताली एक ही गाला वो मतलब डेंग जेके एम्प्लॉयज को फसी साहब आए या सब आए ना उनके बुधाइंदा ताजी असा के जो खबर आ त थी छा है कुछ लोग के माउ खड़ी कैंप में व्याग ना को नालो लगाए ना त साई हाय बुरा असा का जबरी मुशक्कत का मतलब असा के बॉन्डर जे असा के सब शे खबर असा इने के ता इने धोरण के सदी हुआ त पांच मुश्किलात का साथ और इतनी तो खबर आहे बंदी बुधा किया है तो कणक जेका असां खरीद कई हुई 1200 हींअर हले थी मुंहिंजे ख्याल में 25,000 रुपया ऐं हिननि ग़रीबनि मुस्किलनि खे जेको किलो अटो वठनि हुननि खे ॾिनी पियो ऐं तंहिंखां पोइ असां बसर ऐं टमाटनि जी ॾाढी ॻाल्हि करे चुका हुआसीं ऐं कपह जो अघु बि असांखे कोन पियो सही मिले ऐं असांखे टे चूर जो बि अघु जेको असांखे फसल जो अघु कोन पियो मिले
ऐं इन जे लाइ असां जेकॾहिं अव्हां वटि इहो को हुजे तरीक़ो या अव्हां जेको तव्हां अॻिते ॿुधण वारो वफ़ाक़ वारो या कोई इदारो हुजे त उहो जेको असांखे इन जे लाइ हेल्प करे ऐं असांजी फ़सलुनि खे अॻु वधाए ॾे ऐं असांजी ज़मीनूं जेके आहिनि से कमज़ोर थी चुकियूं आहिनि इन्हनि जे लाइ असांखे को अहिड़ो तरीक़ो ॿुधाए ऐं तेल सस्तो करे कहिड़ी वग़ैरह जेका थींदी आहे अॻे भॼन ते थींदी हुई ऐं हॾनि ते थींदी हुई हाणे ट्रैक्टरनि ते थिए थी ऐं उहो लेवल या इहे ॻाल्हियूं जेके आहिनि सो जेकॾहिं थी सघे त असांजी वधि में वधि जेका आहे मदद कयूं। तव्हांजी सभु जेके परेशानी आहे प्रॉब्लम आहे असां सम्झूं था असांखे इहो ख़बर आहे त जीअं ॿ टे शयूं आहे जेके रोज़मर्रा टमाटो आहे बसर आहे ऐं पटाटो ॿिए छा थो त शहर में त हू 250 रुपया किलो बि विकामे थो पर उनजो फ़ाइदो जेको उनखे पैदा थो करे ग्रोथ में रखे इहे असीं सम्झूं था हाणे सोचियूं था त इन में कीअं करणु घुरिजे पंजाब जो जेको सूबो आहे उन में हिकिड़ो सुठो कमु कयो आहे उन्हनि कोशिशि कई त बाबा हीउ जेको आहे अॻिलनि पर न लथा त पंजाब जी गवर्नमेंट हिकिड़ो सुठो कमु कयो असां सोचियूं था त सिंध में कयूं पंजाब छा कयो आहे त जेके विच में हुआ न एजेंट उनखे कढी छॾियो आहे फ़ाइदो एजेंट वठंदो तव्हां वटि एजेंट आयो तव्हां खां माल वठी वियो मिसाल तौरु बाज़ार ते पिया टमाटे जी त बाज़ार में अघु पियो हले 250 रुपया तव्हां खां वठंदा आहिनि 20 रुपया 10 रुपया ईअं थींदो आहे न उन जे हिसाब सां वठंदा आहिनि तव्हां खां वठी वियो ऐं अॻिते वञी विकी 200 जे हिसाब सां तव्हां खां 10-20 रुपया किलो अॻिते वञी विकी 200 रुपया ऐं वरी 50 रुपया रिटेलर वठी रेट फ़र्क़ु थी आहे त उनखे ख़तमु करण लाइ जेको विचो मिडलमैन या एजेंट हूंदो न उनखे पंजाब में कढी छॾियो हाणे डायरेक्ट जेको ग्रोथ आहे जेको फसल उगाए थो उहो खणी थो अचे सब्जी मंडी में ऐं डायरेक्ट पंहिंजो माल ईअं मां सम्झां थो त हिते बि अहिड़ो सिस्टम कनि सिंध में बि त का बहितरी थी सघे थी सभु कोशिशि कंदासीं अहिड़ो बि कमु थींदो जीअं न सर तव्हां जेको मज़ूर ऐं पंहिंजो हारियुनि जे हक़नि जी ॻाल्हि था कयो त उहो गारियुनि खे ऐं हारी खे पंहिंजो हक़ नथो ॾिनो वञे हींअर असांजे ख़ासि करे जेको बल्कि पूरे सिंध में ग़रीबनि कंदा आहिनि साॻियो मज़ूरनि खे मज़ूरी ॾियनि न ॾियनि ऐं घटि मज़ूरी ॾियनि त उहो मज़ूर कंहिंखे तव्हां ॾे या उहो कहिड़े रस्ते ते निकिरे जेको उनखे पंहिंजो मज़ूरी या पंहिंजो अघु मिली सघे फर्ज़ कयो टमाटो उॾिजो रेट जेका असां अञा 1973 में 1000 रुपया एकड़ हींअर महांगाई जे हिसाब सां 1000 रुपया अथो थी फुटी जो जेका असां रेट उनखे मज़ूरी चूंडण जी ॾियूं था 200 रुपया जेकी उहा बि जाइज़ न आहे इन खां पोइ टमाटे जी कटाई आहे टमाटे जी कटाई हींअर 10 रुपया 15 रुपया हले थी जिन में असां 50 रुपया ॾियूं त बि घटि आहे इन महांगाई जे हिसाब सां त उहो ग़रीब या मज़दूर वीचारो कंहिंखे तव्हां ॾे या कंहिं इदारे सां राब्तो करे जेको उनखे उन अमल ते अमल बराबरि थी सघे यानी कि उनजी मज़ूरी में थोरो इज़ाफ़ो थी सघे या मज़ूरी वधी सघे त उहो ग़रीब कंहिंखे तव्हां ॾे उहो असांखे ॿुधायो सभिनि खां पहिरीं जेकी बुनियादी ॻाल्हि तव्हांजी जेका ट्रेड यूनियन आहे तंज़ीम आहे तव्हां उनजे आधार ते ॾिसां थो जीअं तव्हां चयो तमामु जेको आहे 20 रुपया 15 रुपया 50 हुअणु घुरिजे उहो ॿुधाए त तव्हां हू सभु पाण में गॾिजी कयो जेको तव्हांजो आहे पंहिंजो ज़िमेदार जेको बाबा 50 घटि कम न कंदा सभु तव्हां हिकु थी वेंदो तव्हांजो जेको अघु आहे तव्हांखे ॾींदो अच्छा उहो सभिनी खे हिकिड़ो पेश ॼाणण लाइ यानी गॾु करण लाइ असांखे छा करिणो पवंदो इन करे त आया आहियूं तव्हांखे ॿुधायो आहे त तव्हां पंहिंजी कीअं तंज़ीम शादी कयो हिकिड़े हंधि जेतिरा माण्हू आहे सभु गॾिजी वञो लेबर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो हिते केरु आहे पंहिंजो रामो किथे आहे होदा हाँ जी हाँ असां पहिरीं हिमालय एसोसिएशन ठाही त असांखे को बि ख़बर कोन्हे भई ILO वारा आया साईं गुलफाम साहब वारा EFP वारा साईं फसी साहब वारा ऐं 2-3 साल थिया आहिनि आउं सां 4 साल थिया आहिनि 2016 में असांजी कई त शुरूआत में असां सेमिनार करायो
की गॾियासीं कुझु दोस्त माना की बहितरी आणे सघे आबादगारनि में। असां हिकु प्लेटफॉर्म ते न मौजूद ई कोन आहियूं। को छा थो सोचे, को छा थो सोचे, को पंहिंजो फ़ाइदो थो सोचे, पर असां गॾिजी करे इलाइक़े खे ॾिसी असां आबादगारनि जी सूरत हाल छा आहे, असांखे बहितरी कहिड़ी शयुनि में आणणु खपे, छा करणु खपे जो नंढा आबादगार उहे अॻिते वधी सघनि। छो जो नंढो आबादगार पोइते हूंदो आहे, वॾो आबादगार अॻिते हूंदो आहे, हुन फैसिलिटीज़ वग़ैरह हूंदा आहिनि ऐं हू पंहिंजो ॿिज बि रखी सघे थो, मतिलबु वधीक फैसिलिटी डेग में कोन थो वञे अहिड़े क़िस्म। जॾहिं ख़तमु थी वञे तव्हां सां अची हमरा मिलंदो ही तव्हांखे ॿुधाईंदो त इन कीअं ठाही आहे, इन जी मदद वठिजो, तव्हांखे मदद ॾींदी। ठीकु आहे न? हाणे असीं जी ज़राअत वारा जेको असांजो आवाज़ु अवाम ताईं कोन पहुचाए चुका आहिनि ऐं असां जेको हर वक़्तु इहा ई लड़ कंदा आहियूं त बाबा असांखे फसल जो अघु वधायो वञे, त ही जेके मुश्किलातूं आहिनि हारी जूं या ज़मीदार जूं या मज़दूर जूं ये सभु बिल्कुलु पूरी थी वञे। असीं पाकिस्तान जे आला अहदेदारनि खे इहो गुज़ारिश कंदासीं त जीअं असांजे सिंध जी ज़राअत वारा उनजा अघु वधाया वञनि ऐं उन्हनि खे सोचियो वञे त उन्हनि जे लाइ छा रोज़गार सोचियो वञे उन्हनि जो ऐं इहे मुश्किलातूं सभु दूर थींदियूं। तव्हांजी ॻाल्हि सही आहे। इन जे लाइ असां पंहिंजे गवर्नमेंट सां ॻाल्हाईंदासीं, ॿुधाईंदासीं त बाबा इहे ज़मीदार जी मुश्किलातूं आहिनि, इहे हारी जी मुश्किलातूं आहिनि, इनखे दूर कयो, ॿिन्हिनि धुरनि खे पाण में विहारे कराईंदासीं। हाणे असीं अॻिते हलूं था इंशाल्लाह, अॼु बि तव्हां सां गॾु आहियूं, सवाल जवाब थींदा रहंदा। हाणे मां गुज़ारिश कंदुसि पंहिंजे अली शद नक़वी साहब सां त हू अची तव्हांखे जॾहिं तव्हां कमु कंदा आहियो उन में तव्हांजी सिहत ऐं सलामती जे हवाले सां कहिड़ा उपाउ वरिता आहिनि उहे साईं तव्हांखे ॿुधाईंदा। अशरफ अली नक़वी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मैं उर्दू में बोलूँ तो आप लोगों को सबके समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर गुलफाम साहब अगर मैं रुक जाऊंगा और गुलफाम साहब उसके फिर चले ठीक। गुलफाम साहब जो अभी इससे पहले जो तस्करा कर रहे थे, जो बातें कर रहे थे, वो आपके मुताल्लिक थी कि आप जो कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट या जो यूनियन साजी है, तंजीम साजी है, उसके बारे में मैं जो गुफ्तगू करूँगा वो आपको अपने ज़ात के बारे में, काम के दौरान में आपको अपनी सेहत का किस तरह से ख्याल करना है ताकि आप जब काम करें तो काम के दौरान में महफूज अंदाज में काम करें, आपको कोई नुकसान ना हो, कोई बीमारी ना लगे, कोई हादसा ना हो, कोई तकलीफ ना हो। ये बड़ा अहम काम है। आपको मालूम है कि ज़राअत जो है वो हमारे मुल्क में वैसे ही सबसे ज़्यादा बड़ा काम करने का शोबा है, जिसमें लोग काम करते हैं। उसमें जब हम काम करते हैं तो हम बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। आपको मालूम है कोई बहुत से औजार इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो केमिकल्स हैं वो छिड़काव के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की मशीनें इस्तेमाल करते हैं। आप इनको जब इस्तेमाल करते हैं तो जहाँ इनकी बहुत से हमें फायदे मिलते हैं वहाँ पर इनके बहुत से खतरात भी हैं, जिनकी वजह से काम करने वाले को किसी वक्त भी कोई हादसा पेश आ सकता है। तो ये हम जो यहाँ इस वक्त गुफ्तगू करेंगे तो वो कि हम किस तरह से अपने आप को महफूज रखकर काम करें और कौन कौन से कवानीन इस सूबे में खास तौर पर मौजूद हैं जिनके जरिए से हम अपने काम की जगह को महफूज बना सकते हैं, अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। तो ये बता दूं मैं कि तकरीबन दुनिया में तो 25 करोड़ अफराद जो हैं वो इसमें काम करते हैं ज़राअत के शोबे में खास तौर पे, और उनको हादसे का सामना करना पड़ता है, जिसमें से तकरीबन 1,70,000 लोग रोजाना, आप अंदाजा कीजिए, तो उनको किसी न किसी किस्म का हादसा पेश आता है काम के दौरान। खास तौर पर जब हम अपने खेतों में, अपने खलिहानों में काम करते हैं, अपने वहाँ पर जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं
ان سے جو ہمیں خطرات ہوتے ہیں. تو آپ اندازہ کر لیجیے کہ اس سے ہمیں کس قسم کا جو خطرات ہیں، کس قسم کے جو مسائل ہیں وہ پیش آ سکتے ہیں. جہاں ہم بات کر رہے ہیں، میڈم بھی بات کر رہی تھی اس وقت انگریزی میں، ہیلتھ اور سیفٹی کی بات کر رہی تھی، یعنی صحت اور سلامتی کی بات کر رہی تھی. جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ سلامتی کیا ہوتی ہے، صحت کیا ہوتی ہے اور خطرات کیا ہوتے ہیں، شاید میرے خیال میں ہم اپنی گفتگو کو آگے نہیں بڑھا پائیں گے. دیکھیے، سب سے پہلے خطرہ کیا ہوتا ہے یہ آپ کو جاننا ضروری ہے. کیا خطرات ہیں جن سے کہ ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. تو خطرہ کیا ہوتا ہے؟ ایسی کوئی بھی صورتحال، ایسی کوئی بھی چیز، ایسے کوئی بھی ماحول جس سے کہ انسان کی صحت کو نقصان ہو، انسان کی جان کو خطرہ ہو، جس سے کہ اس کی مشینوں کے ٹوٹنے کا خطرہ ہو، مشینوں سے خطرناک گیسیں نکلنے کا خطرہ ہو، اور یا کوئی ماحول کو خطرناک بنانے کا خطرہ ہو. تو ایسی کوئی بھی چیز، ایسی کوئی بھی صورتحال جو موجود ہوتی ہے کام کے دوران میں، اس کو ہم کہتے ہیں خطرہ. اور خطرہ سے بچاؤ کے ہم کہتے ہیں سلامتی، یعنی ہیزارڈ اور سیفٹی. اس کو انگریزی میں جو کہتے ہیں وہ خطرہ اور سلامتی، اپنے آپ کو کس طرح سے بچانا ہے. اب آپ کو بتا دوں، سندھ نے ویسے بھی پہل کی پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پورے خطے میں، ہمارے انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، اس پورے خطے میں ہم نے پہل کی قانون بنانے میں. اس بارے میں صحت و سلامتی کو رکھنے کے بارے میں ہم نے پہل کی. سندھ نے سب سے پہلے، تو سندھ نے قانون سازی کی ہیلتھ اور سیفٹی کے بارے میں جو کام کے دوران. تو اس سے پہلے قانون موجود تھا، وہ صرف محدود تھا، صرف فیکٹریوں میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے محدود تھا. لیکن یہ جو اب نیا قانون بنا 2017 میں، جس کو ہم کہتے ہیں سندھ پیشہ ورانہ صحت و سلامتی ایکٹ 2017، جس کا نام دیا گیا ہے کہ ہماری سندھ اسمبلی نے اس کو پاس کیا ہے اور اس قانون بنایا ہے. تو وہ 2017 میں اس کو پاس کیا تھا، اور اس کے تحت پہلے تو کیونکہ وہ جو قانون موجود تھا وہ محدود تھا صرف فیکٹریوں تک، لیکن اس قانون کی وجہ سے اب یہ ہر جگہ پر لاگو ہو گیا ہے، جہاں بھی، چاہے وہ فیکٹری ہو، چاہے وہ دکان ہو، چاہے وہ کسی کا دفتر ہو، چاہے وہ آپ کی زراعت کا کھیت ہو، چاہے وہ کوئی کسی جگہ پر کوئی عمارت بن رہی ہو، تعمیر کی جا رہی ہو، اس پر، یعنی ان سب جگہوں پر اس قانون کا اطلاق موجود ہے. یعنی آپ کے پاس اب یہ اس میں طریقہ کار درج کیے گئے، جو قانون ہے اس میں وہ طریقہ کار بتائے گئے کس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے وہ قانون کے تحت. تو یہ دو قوانین ہیں جو کام کے جگہوں پر لاگو ہوتے ہیں. لیکن آپ کے پاس جو قانون لاگو ہوتا ہے وہ ہے سندھ آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ ایکٹ 2017، جو کہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں سندھ پیشہ ورانہ صحت و سلامتی کا قانون، جو 2017 میں تھا. ٹھیک ہے. اب آپ کو معلوم ہے، آپ ٹائم کے دوران میں آپ لوگوں سے بھی پوچھتا ہوں، کس قسم کے خطرات کا آپ لوگ سامنا کر سکتے ہیں؟ آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ کام کے دوران میں آپ کس کس قسم کے خطرات کا سامنا کر سکتے ہیں؟ یا کھیتی باڑی میں جو کام ہوتا ہے تو اس فارمر پر جو اثر پڑتا ہے، جب یہ زہریلی لیکوڈ دوا ہوتی ہے، کھاد وغیرہ بھی جو لگتا ہے تو کسان کو تو اس میں خطرہ ہوتا ہے. اور جیسے کہ فیکٹری میں جو بلند کے کسی ٹرین پہ کام کر رہا ہے یا کپڑے پہ یا کسی میں گرنے کا بھی کام ہوتا ہے، الیکٹرانک کا شارٹنگ کا کام ہوتا ہے، ہر کسی میں خطرہ تو خطرہ ہوتا ہے. مگر زمینداری کو تقریباً دوائی میں چھڑکنے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے، وہاں پہ بہت خطرہ. بالکل صحیح. ایک بات انہوں نے بتائی کہ جو آپ جراثیم کو مارنے کے لیے، جراثیم کچھ ادویات جب پھینکتے ہیں تو کیڑوں کو مارنے کے لیے جو دوائیں پھینکتے ہیں، وہ ایک خطرہ ہے. اور کوئی خطرہ جو آپ کے نظر میں ہو، موجود ہو آپ کے کام کے دوران، جس سے آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہو، جس سے آپ کی صحت کو نقصان پہنچتا ہو، جس سے کوئی حادثے کا امکان موجود ہو، اور کوئی آپ کی نظر میں؟
सबसे मेरे ख्याल में सबसे बड़ा खतरा आता है किसानों के लिए, जो रात को या अंधेरी रात में पानी का आवारा होता है जमीन पे, तो वहाँ सांपों का भी बड़ा खतरा है, तो इसका भी एहतियात होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये दूसरा जो नुक्ता है, दूसरा खतरा, और वो इन्होंने इस बात का इजहार किया। आप लोगों में और कोई खतरा जो आपके जहन में हो? जी बिल्कुल। किसान जब स्प्रे करता है या स्प्रे करवाता है अपने हाली से, उसके बाद कोई सब्जियां का जिस तरह खेत है उस पर स्प्रे कर देते हैं दवाई का, जहर का, तो बाद में जो पास वाले नजदीक के लोग होते हैं वहीं से वो सब्जी उठाकर इस्तेमाल में ले आते हैं, उनको पता नहीं होता इस पर दवाई छिड़की गई, उसका कोई एहतियात नहीं लगाया जाता या निशानी नहीं लगाई जाती कि इस पे जहर का स्प्रे किया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए मैं भी अपनी तरफ से दो चार बातें आपको बता देता हूँ कि किस किस किस्म के खतरात से सामना किया जा सकता है, खास तौर पे जो जिम्मेदारी में जब आप काम कर रहे होते हैं। तो वो मैं आप लोग सब जानते हैं हल चलाने के लिए ट्रैक्टर की जरूरत होती है, ठीक है ना। ट्रैक्टर एक मशीन है, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और बताऊं मैं आपको, कहीं आप बिजली का इस्तेमाल करते होंगे, बिल्कुल बिजली का इस्तेमाल फायदे हैं, वहां आपको कोई हादसा भी पेश आ सकता है, करंट लग सकता है। और बताऊं मैं आपको, आप मानो में नहीं देखा, उसमें गिरने का खतरा मौजूद है, गिर के भी चोट लगती है ना। तो आपका अगर खुदा न खास्ता गलत अंदाज में गिर जाए तो आपका कोई जिस्म का हिस्सा टूट भी सकता है, होता है काम करने के दौरान। एक आप यहाँ इस्तेमाल करते हैं जब मुख्तलिफ अद्वियात वो आप अपने सांस के जरिए से जिस्म में लेके जाते हैं, वो आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है, ये भी एक खतरा है, ठीक है ना। इस तरह से आप खासतौर पर जब काम कर रहे होते हैं कपास के खेत में, और कपास को चुन रहे होती हैं खवातीन हमारी, और आप दोस्त सब, और कपास की जो गांठें हैं वो बना रहे होते हैं, तो कपास की गर्द उड़ती है, गुबार उड़ती है, जिसम में नाक से जगहों तो वो भी नुकसान जाती है। बड़ी बड़ी खतरनाक किस्म की बीमारी हो जाती है अगर ज्यादा अरसे तक उस कॉटन डस्ट को, जो कॉटन की जो हो रही है उसको अगर हम सांस के जरिए जिस्म में लेके जाएंगे तो बड़ी खतरनाक किस्म की बीमारी लग सकती है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सांस की बीमारी होती है। वो कॉटन की आप अंदाजा करें कि ये, और अब जब खेत में काम करते हैं इस इलाके में जहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, खास तौर पर, और इसी तरह से सांगड़ में और सिंध के दीगर इलाकों में, इन सब में धूप गर्मी भी जो है वो हमें नुकसान पहुंचाती है। ज्यादा धूप में रहें तो बेहोश होकर गिर जाते हैं, होता है ना। अगर ज्यादा देर तक ज्यादा गर्मी में जब 50 डिग्री से टेम्परेचर होता है, लू चल रही होती है, तो और आदमी ने पानी नहीं पिया सही तरह से, तो वो कभी कभी गर्मी से दस्त आके बेहोश भी हो जाता है। खतरात हमारे क्या ना, अब इनको जानने से ये बताना चाहिए, हमें ये भी मालूम होना चाहिए क्या होता है। सबसे अहम बात जो है वो यही है कि खतरा तो हो, खतरे भी होंगे। जब आप काम करेंगे तो इन सब चीजों का, सब मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा ना।
जब ये सामना करना पड़ेगा इसका मतलब है हमें इससे अपने आप को बचाने के लिए कोई तदाबीर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ठीक है, आप सब लोग इस वक्त इस्तेमाल भी कर रहे हैं। सबसे अहम तदबीर ये, अगर हम अपने आप को बचाने के लिए जैसे कॉटन की डस्ट है, दवाएं हैं, मुझे रखते आप पहने उसको। आप सब इस वक्त भी पहने हुए, इस वक्त भी आप सब क्यों पहने हुए? क्यों पहने हुए? इसीलिए पहने हुए ना कि वो जो खतरा है उस बीमारी का जो कि हवा में मौजूद होती है, उससे अपने आप को, अपनी नाक और मुंह को बचाएं, ताकि वो जो हवा में मौजूद उसके जरासीम है वो हमारे जिस्म में दाखिल ना हो। इसी तरह से अगर ये जो उठ रही होती है जब आप कपास काम कर रहे होंगे तो आप मुख्तलिफ किस्म का मास्क इस्तेमाल करेंगे। जब आप मुख्तलिफ किस्म की जरासीम जब डालेंगे दवाएं तो उससे बचाव के लिए आपको उसके आप उड़ा रहे हैं ना, हवा में उड़ा रहे हैं ताकि हमारे जो खेतों में पौधे हैं उन तक पहुंचे और जो वो मर सके। उससे बचाव के लिए आपको क्या करना होगा? वो खास किस्म का जो भी मास्क है वो पहनना होगा। जब उसको इस्तेमाल कर रहे होंगे हम उसमें पंप में डालने के लिए ताकि स्प्रे कर सके तो हमें क्या पहनना चाहिए? ग्लव पहनना चाहिए, जिसको दास्ताने बोलते हैं। कोई केमिकल का बचाव को पहने, वरना आप देखते हैं आपको ये खाल जो है इसमें छोटे छोटे जर्रात मौजूद, खलिए मौजूद होते हैं, ओपनिंग होती है, सुराख मौजूद होती है। अगर आप उन दवाओं को बगैर ग्लव के हाथों का इस्तेमाल करेंगे तो वो ज्यादा दिनों में जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके ये जो सुराख है, मसान जिसको बोलते हैं, उसमें वो खतरनाक केमिकल दाखिल हो जाएगा और वो आपके खून में शामिल होकर फिर आपको आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। जी इसके प्रॉब्लम भी होती है और मैंने वो सारी बीमारियां जितनी भी हो सकती हैं वो अगर जिस्म में कोई भी चीज दाखिल हो जाए, और जिस्म में दाखिल होने के 3 या 4 तरीके हैं जो आमतौर से हो सकते हैं किसी भी चीज को दाखिल। एक तो सांस के जरिए से, एक हलक के जरिए से, जो आप मुंह के जरिए से लें, और तीसरा ये जो आपके खाल में सुराख मौजूद है, मसाम मौजूद है, इनमें से जज्ब होकर वो आपके जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। तो ये आपको यानी बचाना क्या है? अपने इन जो सुराख है खाल में मौजूद उनको, नाक को और मुंह को। तो हवा में मौजूद होते हैं, जो हवा में मौजूद है उनको तो नाक और मुंह के जरिए मास्क पहन के बचाया जाता है, लेकिन जो लिक्विड की शक्ल में है या जो ठोस है, जो पानी माए की शक्ल में है, उनको बचाने के लिए जब आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या पहनेंगे? ग्लव पहनेंगे। इसके साथ साथ और क्या पहन सकते हैं आप? वो अगर गिर जाए तो आपके पाँव पर भी लग सकता है वो, यानी पाँव में भी आपको पता है कि वो मसान तो मौजूद है। बता रहा हूँ उसके भी बता रहा हूँ। ये तो अभी आपकी जो काम के मुतालिक है ना, सब बता रहे हैं। मच्छर से बचने के लिए भी आपके पास दवाएं हैं। मच्छर से बचने के लिए कुछ कॉइल्स भी हैं, आपको मालूम है। फसल में भी आप अपने जिस्म पर एक वो आता है, केमिकल आता है जिसको मॉस्किटो रिपेलेंट बोलते हैं। यानी जो जगह खुली होगी, जैसे हाथ खुले होते हैं, मुंह खुला होता है, जो बाकी तो सब कपड़ों में ढका होता है ना, आँख खुले होते हैं, उन पे आप वो केमिकल ज्यादा महंगा नहीं होता, वो ज्यादा महंगा नहीं होता, वो आप अपने जिस्म पर लगा लें तो मच्छर जो है वो आपके ऊपर जो है नहीं आएगा, नहीं काटने नहीं आएगा। लेकिन मैंने बताया ना, ये जब आप ग्लव पहन लेंगे तब भी महफूज हो जाएंगे, जब आप जूते पहन लेंगे तब भी आपका पाँव महफूज हो जाएगा, जब आप मास्क पहन लेंगे तो आपके नाक और मुंह का हिस्सा महफूज हो जाएगा। बाकी हिस्से जो है वो उनको आपको चाहे तो वो केमिकल लगा लें, वो जो
آپ بول رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ قابو کرنے چاہیے، ناک قابو کرنا چاہیے. ہم 1.5 من کی کھیتی جو ہے اپنے سر پیچھے رکھتے ہیں، اس پر ضائع ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی بندوبست کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس کے لیے بھی بہت سے جو انجینئرنگ کے سولوشنز ہیں وہ موجود ہیں. آپ کو وزن، پہلی بات تو یہ کہ جو انجینئرنگ کے کار ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے وزن اپنی کمر پہ نہیں رکھنا ہے آپ نے. پہلی بات تو یہی ہے. میں اپنی بات وزن ہمیں کمر پہ نہیں رکھنا تو پھر کہاں رکھنا چاہیے؟ وہی بات بتانے جا رہا تھا. اور اس سے بہتر یہ آپ کو ٹرالی استعمال کریں، اس کو رکھیں، ٹرالی پہ رکھیں اور لے کے جائیں. آپ کو ٹرالی ملتی ہے نا. اچھا وہ ٹرالی، وہ فصل ہمارے خراب ہو گیا، ہم چل نہیں سکتے، وہ ٹرالی کہاں سے ملے گی؟ اس سے ایک پہیے والی ٹرالی ہوتی ہے، جتنے حصے میں آپ اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں وہ لے کے جاتے ہیں. لیکن باہر کسی جگہ پر اٹھانا پڑے گا، مجھے معلوم ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، جب آپ کو اپنے جسم سے لے کے استعمال بیٹھے جب جسم کے لیے استعمال اٹھانا پڑے گا، ہاتھ لگانا پڑے گا، ہو سکتا ہے کہ باقی بھی جسم کا کوئی حصہ وزن اٹھانے میں استعمال ہو. ایک تو یہ کہ اس کا وزن اٹھانے کا طریقہ یہ کبھی بھی آپ کمر میں جھک کر نہیں استعمال کریں. کوئی بھی چیز نہیں اٹھائیں گے کمر میں جھکیں گے تو آپ کا کیا ہوگا؟ وزن اٹھائیں گے تو آپ کی کمر میں جھک آ جائے گا. نہیں، وہ آپ جب بھی اٹھائیں گے یعنی کمر نہیں اٹھے گی، گھٹنے کے بل نیچے بیٹھیں گے، ایسے بیٹھ کے اور یہ ایسے اٹھے، یہ کمر سیدھی رہے گی. آپ کو وزن ایک طریقے سے کمر میں چک نہیں آئے گا. دوسرے اس کو اٹھانے کے لیے بھی میں نے بتایا نا کہ وہ طریقے ہیں. آپ وزن سے نہیں اٹھائیں گے. ایک تو میں نے ٹرالی بتلائی ہے، اور بھی طریقے وزن اٹھانے کے آ رہا ہے، بالکل آ جائے گا. لگ رہا ہے آپ کا یہ انشاءاللہ تھوڑا سا رہ جائے. آپ کی آنکھوں کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. بالکل معلوم ہے. آنکھیں جب آپ چشمہ نہیں پہنیں گے تو آپ کی آنکھوں کو اگر وہ جو دوائیں استعمال کر رہے ہیں اور آنکھوں میں چلی گئی، بتائیں کیا ہوگا؟ آنکھوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اس کے لیے چشمہ پہنایا جاتا ہے. اسی لیے چشمہ نہیں پہنیں گے آپ کو نقصان ہو جائے گا. آنکھوں پہ کوئی چیٹ آ گئی آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں آپ چشمہ پہنے. تھوڑا سا رہ گیا، معلوم ہے آپ کو کہیں کام کرنا ہے، آپ لہذا یہ جو اس کو کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائی ہیں، چاہے ماسک ہو، گلو ہو، جوتے ہو، آنکھوں پہ چشمہ ہو، اس کو کہتے ہیں پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ. عام طور پر وہ استعمال ضرور کیا کیجیے جب بھی آپ اس قسم کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں. کوئی وزن اٹھا رہے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ اس کو کسی مشین کے ذریعے سے اٹھائیں. کوشش یہ کریں. جہاں نہیں ہے اویلیبل، وہاں مجبوری ہے، وہاں کو اٹھانا ہے تو کم سے کم آپ کا جسم ضرور ڈھکا رہنا چاہیے. یہ ضرور. اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی تربیت کریں، ٹریننگ بھی کرنی چاہیے کام کے دوران میں، تاکہ ہمیں خاص طور پر کوئی اس قسم کے بارے میں معلوم ہو جائے. لہٰذا یہ آپ کپڑے پہنے وہ والے جو جن سے کوئی آپ کو استعمال کر رہے ہیں اس قسم کی چیزیں، وہ آپ کے جسم کو بچا کے رکھیں. جوتے نہیں، کپڑے بھی اچھے لگ جاتا ہے، وہ لگ سکتا ہے. بجلی کا کام جو ہے وہ جب بھی کریں محفوظ انداز میں کریں. بجلی آپ دیکھ رہے ہیں، جب میں نے بتایا بھائی جو بھی میرے کہا تھا بہت ہی خطرناک، جہاں دوست کا خطرناک ہے. بجلی کو جب بھی کریں محفوظ انداز میں استعمال کریں. اور ساتھ ایک کام اور کہیں بھی کام کر رہے ہیں اور کئی قسم کے مختلف مضر کیمیکل استعمال کر رہے ہیں، ساتھ میں قریب پانی ضرورت ہے. کبھی خدا نخواستہ اگر آپ جسم کے کسی حصے پر لگ جائے کوئی خطرناک کیمیکل تو فوراً اس کو پانی سے دھو دیں. تو آپ کو جو ہے وہ جو اس وقت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے وہ قابو میں آ جائے.
नुकसान कम होगा। पहली बात तो ये चीजें पहले नहीं होगा, पानी रखें ताकि उसमें आपको फौरन अगर आंख में लग रही है आंख धोएं, हाथ में लग जाए हाथ धोएं, इस तरह की चीजें हैं। अब आपके ध्यान में कोई सवाल है तो? डाइट को आप, मैंने बताया, आप करें ही नहीं ऐसा काम जो उसमें फायदा लग जाएगा। तो उसका अभी तरीका है, एक तो ये कि सबसे कोशिश करें, दूसरा आदमी जो है वो सबसे पहले जाके जहाँ से बिजली आ रही है उसका स्विच बंद करे, फिर आगे वो उसको बचाए। और अगर कोई ज्यादा बड़ा हो गया तो उसको कहीं वो जो सांस, मसनूई सांस लेने का तरीका है, मसनूई सांस लेने के तरीका इस्तेमाल करें। कहीं अगर कोई उसको ज्यादा बड़ा हो गया तो फौरन उसको अस्पताल ले जाए। इसका ये बिजली का अगर बड़ा चार्ज वो लग गया है, शॉर्ट लग गया है, तो उसके लिए तो सीधा है। लेकिन सबसे अहम तरीका जो है ना दुनिया में भी सबसे अहम तरीका यह है, अपने आप को महफूज अंदाज में काम करो। हाँ, एहतियात जो है वो तो उससे बेहतर है, एहतियात इलाज से बेहतर है। दूध पीने का तो ठीक है, उसको पीने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन असल काम है अगर ज्यादा बड़ा शॉर्ट लग गया है खुदा ना खास्ता, तो बेहतर यही है कि आप उसको अस्पताल में लेके जाएं और अस्पताल में ट्रीटमेंट या करीबी कोई भी जो भी डॉक्टर है उसके पास लेके जाएं, वो ज्यादा बेहतर अंदाज से। सर एक मेन चीज आपने दस्ताने का मास्क का इसका इस्तेमाल तो बता दिया है, लेकिन ये परचेज नहीं कर पाती है, तो क्या वो घर में सीधे कपड़ों के दस्ताने और मास्क इस्तेमाल कर सकती है, सुटेबल है? असल में मसला ये है कि हर दस्ताना हर काम के लिए नहीं होता, हर जूता हर काम के लिए नहीं होता। ये मैं बता दूं, जिस किस्म का आप जब कोई केमिकल इस्तेमाल करते हैं उसके लिए मखसूस दस्ताना कि जो आप ये पहने हुए मास्क, ये कोरोना से बचाने के लिए, ये उस मुज़र दवा है उसके स्प्रे से बचाने के लिए नहीं है। मिसाल के तौर पर ये मुख्तलिफ लिहाजा खास तौर पे अब तो ऐसा भी होने लगा है कि जो ये मुख्तलिफ किस्म की दवाएं बेचने वाले लोग हैं वो अपने साथ उस किस्म के वो जो ग्लव्स हैं वो भी फराहम करते हैं जी। वो उसका पार्ट होता है, वो जब दवा देंगे तो साथ में आपको एक ग्लव भी देते हैं ताकि वो जब आप इस्तेमाल करें तो उसको पहने। ऐसा बहुत सी हमारी जो सप्लायर हैं कंपनियां मुख्तलिफ किस्म की दवाओं की, वो ये चीज़ कर रही हैं, लेकिन आप उसको ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं होती, ये भी मैं बता दूँ, महंगी नहीं होती। मुझे मालूम है वो कम से कम एक दस्ताना मैं समझता हूँ अगर उसमें कोई तोड़ फोड़ टूट नहीं हो तो वो 1 महीने तक आप उसको बगैर किसी उसके अंदाज से इस्तेमाल कर सकते हैं इस किस्म के केमिकल से बचने के। बहुत शुक्रिया। हाँ
जवाब दे गया। अगर मानी अगर मैं कुछ दे रहा है तो मुझे देखता है पानी दे रही लाइव स्टॉक जेको ख़ासि आहियां तो मां तव्हांखे कुझु लाइव स्टॉक जे बारे में थोरो ॿुधाईंदुमि त जानवर जेके आहिनि जानवर जेके रखनि था उहे कहिड़े नमूने रखनि उनजी सार संभाल कहिड़े नमूने कनि न जानवर जो वधाउ कीअं थिए छो त लाइव स्टॉक ऐं एग्रीकल्चर जेका आहे इहा मईशत जा पिलर आहिनि जेकॾहिं तव्हांजो लाइव स्टॉक तंदुरुस्त तवान आहे तव्हांजी मईशत तंदुरुस्त तवान आहे तव्हांजो एग्रीकल्चर तंदुरुस्त तवान आहे तव्हांजी मईशत तंदुरुस्त तवान आहे हिकिड़ो एकड़ हुजे हुन बि ज़रूरु हिकु मेंह या बकरी हूंदी जेकॾहिं 2 एकड़ हुजनि हुन वटि इहा शयूं हूंदियूं 40 एकड़ हुजनि उन वटि इहा शइ ज़रूरु हूंदी छो त मां तव्हांखे इहो मशवरो ॾियणु चाहियां थो जानवर की लाइव स्टॉक आहे जानवर की जानवर रखनि था पंहिंजे जानवर खे वैक्सीनेशन करायो बचाव जा टीका लॻायो छो त असांजे मिनिस्टर साहब अब्दुल बारी खान किताबी साहब सेक्रेटरी एजाज हुसैन महेसर साहब डीजी मुज़फ़र अली कलोड़ो साहब डीजी नज़ीर अहमद कलोड़ो साहब डायरेक्टर राणा एहतशाम नक़वी खास करे लाइव स्टॉक उन्हनि खे सख़्त इंस्ट्रक्शंस आहिनि त लाइव स्टॉक जे लिहाज़ सां असां का बि कंप्लेन का बि शिकायत न ॿुधूं मुंहिंजी हमेशह इहा कोशिशि आहे त जेको ख़ासि ज़िले खे हर प्रेस क्लब में वेंदो आहियां इहो ई पंहिंजे दोस्तनि खे चवंदो आहियां जेके लाइव स्टॉक रखनि पिया था मुंहिंजो इहो मशवरो हूंदो आहे भई पंहिंजे जानवर खे वैक्सीन करायो पंहिंजे जानवर खे ट्रीटमेंट करायो पंहिंजे जानवर खे डीवर्मिंग करायो जेकॾहिं जानवर खे वैक्सीन न थियल हूंदी जानवर खे बचाव जा टीका न लॻल हूंदा त उहो जानवर अॻिते हली बीमार थी पवंदो मूं बि अलाह जी महिरबानी सां असांजे ज़िले जेको ख़ासि में वैक्सीनेशन जो सिलसिलो जारी आहे 12 महीना जारी आहे छो त विपुखास ज़िले में तक़रीबन 20 लख जानवर आहिनि डॉक्टर 13 आहिनि स्टाफ असिस्टेंट 22 आहिनि 34 सेंटर आहिनि 20 लख जानवर जे हूंदे बि अलाह जी महिरबानी सां विपुखास में अहिड़ी मुताइद का बि कंप्लेन का बि शिकायत कोन थी अचे मुंहिंजा सेंटर्स खुलियल आहिनि तव्हां वञो मुंहिंजे सेंटर्स ते तव्हां वञो मुंहिंजे अस्पताल में उते डॉक्टर सां तव्हां राब्तो कयो जेके डॉक्टर खे यूनिट में निकितल हुजनि तव्हां पोइ तव्हां मूंसां राब्तो कयो इंशाअल्लाह ताला तव्हांजे जानवर खे मां वैक्सीन बि कराए ॾींदुमि तव्हांजे जानवर जी ट्रीटमेंट बि कराए ॾींदुमि तव्हांजे जानवर खे डीवर्मिंग बि कराए ॾींदुमि छो त हमेशह ग़रीब खे जॾहिं पैसो गॾु थींदो आहे 15,000 20,000 30,000 गॾु थींदा आहिनि हमेशह इहा सोच मुंहिंजे ज़हन में ईंदी आहे 10,000 5,000 छा मिलंदी 15,000 छा मिलंदी पोइ बि हिकिड़ी बकरी ज़रूरु मिलंदी जेकॾहिं हिकिड़ी बकरी जेकॾहिं सही नमूने तव्हांजी सार संभाल कयो हिकिड़ी मेंह आहे जेकॾहिं सही नमूने जी सार संभाल कयो तव्हां डॉक्टर सां कॉन्टेक्ट में रहो डॉक्टर खे तव्हां ट्रीटमेंट करायो बीमार थे तव्हां डॉक्टर खां वैक्सीन करायो इंशाअल्लाह ताला इहा बकरी तव्हांजी बकरियूं थींदियूं तव्हांजी मेहूं थींदियूं तव्हांजी भॼियूं थींदियूं पर शर्त इहा आहे तव्हां कॉन्टेक्ट में रहो तव्हां जेकॾहिं कॉन्टेक्ट में नथा रहो त पोइ लाज़मी लाइव स्टॉक तव्हांजो पोइ ते हलियो वेंदो तव्हांजो जानवर पोइ ते हलियो वेंदो आहे जेकॾहिं हिकिड़ी में आहे हिकिड़ी में तव्हां सार संभाल सुठे नमूने न कंदो त कमज़ोर थींदी बीमार थींदी अलाह सां कंदो तव्हां डॉक्टर सां कॉन्टेक्ट कंदो बचाइण वारी ज़ात अलाह सां जी ज़ात आहे अलाह
ट्रीटमेंट कराइंदो अल्लाह से शफा दी इंशाअल्लाह ताला मुझे वदमावद जले विप खाट जे अवाम के तलकीना ते कोट गुलामन में आयो आया मुझे वदमावद के तलकीना त जन्नत लाइव स्टाक ता मुझे सेंटर से वनो इते मुझे सेंटर आ कोट गुलामन में ता उते ता वनो जेकर ता जानवर के वैक्सीनेशन न थल हुजे तो मुझे डॉक्टर ईंदो या मुझे स्टाफ असिस्टेंट ईंदो उनके वैक्सीन करे ईंदो जेकर वैक्सीनेशन थल आ तो सही आ न थल हुजे ता कदे जानवर बचायो ता जानवर बचाईंदो ता तरक्की कंदो ता एग्रीकल्चर ते ध्यान घणो ॾींदो ता तरक्की कंदो इन शहरनि ते जेकर तव्हांजो ध्यानु न ईंदो त कॾहिं बि तव्हां तरक्की न कंदो महिरबानी गवर्नमेंट के तव्हां वञो था अस्पताल में वञो मुंहिंजो स्टाफ वेठो आहे मुंहिंजो स्टाफ जो तव्हां इंतज़ार ॾिसो स्टाफ जी कमी आहे जेकर को गुलाम हिकिड़ो स्टाफ असिस्टेंट आहे ट्रीटमेंट करणु तव्हांजो इंतज़ार कयो हुनखे तव्हां चओ कमरे जो तव्हां अरेंज कयो हुनखे तव्हां चओ उहो तव्हां गॾु हलंदो तव्हां जानवर जी वैक्सीन बि कंदो तव्हां जानवर जी ट्रीटमेंट बि कंदो पोइ बि मां ड्यूटी डायरेक्ट लाइव स्टाफ जेको पास आहियां तव्हां फौरन मूंसां राब्तो कयो इंशाअल्लाह ताला तव्हां का बि लाइव स्टाइल जे लिहाज़ सां इंशाअल्लाह ताला तव्हां का बि तकलीफ़ न डॉक्टर गलबानी साहब आपके आमद का बहुत शुक्रिया आपसे हम ताउन हासिल करते रहेंगे